Welcome friends. Okay, so we are resuming from the previous video here. Okay, previous video is made short due to the insufficient memory. Okay, so I am resuming from the previous video. In previous video we have learned regarding the why phosphorus is necessary, or we were studying about the phosphate solubilizing microorganism, and in that we have just completed the introduction of phosphate solubilizing microorganisms. Okay, let's come to the today's topic. Today's topic is the mechanism of action of phosphate solubilizing microorganism. Okay, mechanism of action of a phosphate solubilizing microorganism. Here we are going to learn today. So see here in this slide the mechanism of phosphate solubilization. Phosphate solubilizing microorganism apply various approaches to make phosphorus accessible for plants to absorb. These include lowering of soil pH, silating and mineralization. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं फॉस्फरस, तो उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे कराते हैं वो अवेलेबल। तो इसमें जनरली 3 प्रोसेसेस है। लोअरिंग ऑफ सॉइल पीएच है, जो सॉइल का पीएच लो करते हैं, कैसे करते हैं, तो बाय secreting organic acid. It act as a chelating agents and it produce mineralization reaction is occur in them. Okay, and that minerals is then used by the plants. Okay, so let's see the exact mechanism of action of phosphate solubilizing microorganism. Generally plant absorbs phosphorus in only 2 soluble forms, that is monobasic phosphorus and dibasic phosphorus. Okay, and a solubilizing bacteria enhance the solubilization of insoluble phosphorus compounds through the release of organic acids. Okay, they enhance the insoluble phosphorus compounds through solubilization. They enhance the solubilization by secreting the organic acid and the phosphatase and phytase enzymes. Okay, and these microorganism possesses phosphatase and phytase enzymes. These enzymes mainly involved in the solubilization of phosphorus or in the synthesis of organic acids. Okay, and these enzymes are widely present in all varieties of soil microorganism. And what happens during this conversion, the process of phosphate solubilization, a part of phosphorus is assimilated by microorganism, but the amount made soluble and released is in excess to the requirement of the microorganism. Okay, जो microorganism जितने अमाउंट में उसको solubilize करते हैं फॉस्फोरस को, ओके, तो और फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने के बाद जो एसिमुलेट होने के बाद जो अमाउंट रिलीज करता है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, जितना फास्फोरस उसने एब्जॉर्ब किया है, सॉल्युबलाइज किया है, उससे कहीं ज़्यादा वो रिलीज करता है एक्सेस। वो उसको जितना यूज़ करना है वो यूज़ करता है, और दैट रिमेनिंग एक्सेस फास्फोरस इज मेड अवेलेबल टू यूज ऑफ प्लांट्स। ओके, तो वो जितना एक्सेस फास्फोरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो माइक्रोब्स को कम लगता है फास्फोरस, लेकिन वो बहुत सॉल्युबलाइज करते हैं और लेकिन उनको उतना यूज नहीं होता है। ओके, द एक्सेस अमाउंट हैज रिलीज इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन प्रोसेस ऑर्गेनिक एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, दे आर इन्वॉल्व इन द डिसॉल्विंग ऑफ दैट salts. Okay, dissolving that the phosphorus. Okay, and it is equally important the nitric acid and sulfuric acid. As a result, these organic and inorganic acids convert calcium phosphate to dimonobasic phosphate and are then easily made available to plants phosphate. Okay, so ये organic acids help करते हैं कि उनको मोनोबेसिक्स में और डाइबेसिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। और मोनोबेसिक एंड डाइबेसिक, ये दीज आर द टू फॉर्म्स, इन द टू फॉर्म्स प्लांट्स मेनली एब्जॉर्ब फॉस्फोरस। ओके, तो ये दोनों फॉर्म है। तो कैसे मैकेनिज्म होता है, तो 3 प्रोसेसेस है मैकेनिज्म में। लोअरिंग ऑफ पीएच है। लोअरिंग ऑफ पीएच कैसे होता है, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स the organic acids, and you know the pH of organic acid is acidic. Okay, and hence as they are started to secrete organic acid, their pH gets lower. Okay, तो pH कम हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड से, और जैसे कि pH कम होगा वो सॉइल का ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट होगा, तो pH कम होगा और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये चिलेट करता है, चिलेटिंग एजेंट बोल के एक्ट होता है इसी प्रोसेस में। इट एनहांस द solubilization process. Okay, and finally it produces the minerals. Okay, that is known as the mineralization. See here in this slide the detailed principle of mechanism is given there. The principal mechanism is the production of mineral dissolving compounds such as organic acid, sidephores, protons, hydroxyl ions and carbon dioxide.
Organic acid produced together with their carboxylic and hydroxylic ions chelate cations or reduce the pH to release phosphorus. Okay, the excretion of these organic acid is accompanied by a drop in pH that results in the acidification of the microbial cells and the surroundings. Hence, phosphorus ions are released by substitution of hydrogen ions for calcium too. See here in this slide, you will find the different acids, organic acids, which are synthesized by the phosphorus solubilizing microorganism. They synthesize these organisms, and due to the synthesis of these organic acids, their pH, their body pH drops. Okay, with if you compare with the surroundings, and as soon as their body pH drops or becomes acidic, they started to release phosphorus from their body. Okay, and that released phosphorus is made available for, or that released phosphorus is then used by the plants. Okay, so there you can see here malic acid, glutamic acid, glycolic acid, malonic acid, ketobutyric acid, tartaric acid, fumaric acid, glycoxylic acid, malic acid, citric acid, oxalic acid, acetic acid, lactic acid, various types of organic acids. Okay, and they can be easily secreted by those organisms with phosphate solubilizing microorganisms. So see here in this slide the factors which are influencing the microbial phosphate solubilization. What are those factors which affect the phosphate solubilization? Okay, here the nutritional richness of soil. Soil is the important factor, which also means if that soil is present on extremes such as saline alkaline soils, or where the temperature is very high, at that location soil has more tendency to solubilize phosphate as compared to the phosphate solubilizing microorganism. Okay, means in extremities or extreme soil or environmental conditions, those microorganisms survives, they have more tendency to solubilize microorganisms. Again, temperature also affects on the solubility of phosphorus. Okay, and it is found that by the study of White, scientist White et al. In 1997, it is found that the 20 to 25 degrees Celsius temperature is the optimum temperature for maximum microbial phosphorus solubilization. Okay, so temperature is also affects the phosphate solubilization as like soil. Okay, interaction with other microorganisms in the soil, the extent of vegetation, ecological condition, climatic zones, soil types, plant types, agronomic practices, land use systems, and the soil physiochemical properties such as organic matter and soil pH, they also affects the solubilization of phosphate. Okay, and they vary, their solubility is vary according to the soil, climatic condition, plant type, agronomic practices, okay, land system, everything. So ये जो फैक्टर्स है जो कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं. ज़्यादा सॉइल, ऑलरेडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो उसमें कम टेंडेंसी होगी फॉस्फेट सॉल्युबलाइज करने की. अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट ही कम है, वेरी लो न्यूट्रिएंट है सॉइल में, तो उसमें ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो जाएगा. और जहाँ पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे कि बहुत ही सलाइन और अल्कलाइन सॉइल होती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करने की. ओके, और वो साइंटिस्ट वाइट एट ऑल के रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन. वो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको कहते हैं? जो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजेशन होता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स which are on phosphate solubilization. So in this slide, let's see the benefits of phosphorus solubilizing microorganisms. क्या बेनिफिट होते हैं phosphorus solubilizing microorganisms? Phosphorus accumulated in soils, phosphate solubilizing microorganisms that are capable of transforming insoluble phosphorus to soluble forms can function as a biofertilizer. तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म एज अ बायोफर्टिलाइजर बोल के भी एक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट, ओके, और नेसेसरी एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो एनी प्लांट, ओके, और विच इज वाइटल एलिमेंट ऑफ एनी प्लांट, तो वो प्रोवाइड करते हैं. इसलिए हेंस वी कैन called it as a biofertilizer. Also this increase the soluble phosphorus content
and the use of phosphorus biofertilizer is a promising approach to improving food production. तो ये फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द फूड प्रोडक्शन, it enhances the agricultural yield, and it is better to use an environmentally friendly approach to solve the problems of infertile soil. तो ये इनफर्टाइल सॉइल का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इको फ्रेंडली भी है, ये एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ा देता है और इजी टू यूज़ है. तो ये these are some advantages or benefits of phosphate solubilizing microorganisms. Here the flow charts of phosphate solubilizing microorganisms is given there. A role of phosphate solubilizing bacteria in plant growth and development. Okay, so what role they play? They plays role in the stimulating of nitrogen fixation. They plays role in the biocontrol of plant pathogen. They plays role in the cytophore synthesis and increase the colonization. They also plays their role in the support resistance to the abiotic stress. They plays role in their antibiotic production. Okay, also they plays role in the production of plant growth hormones, increases the accessibility of other trace elements like ferrous, zinc, magnesium and copper. Okay, so they are involved in these different activities. This chart, flow chart shows the activities solubilizing bacteria, role of phosphate solubilizing bacteria in plant growth and development. तो ये फ्लो चार्ट में क्या दिखा रहा है, रोल फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का रोल है जो कि प्लांट के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या क्या करता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टिमुलेट करता है, बायो कंट्रोल प्लांट पैथोजन को करता है, एंटीबायोटिक्स सीक्रेट करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है स्ट्रेस एलिमेंट की, जैसे फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है और कॉपर है, और आल्सो इट सपोर्ट्स द रेजिस्टेंस टू अबायोटिक स्ट्रेसेस. So this is all about the phosphate solubilizing bacteria. In this video we covered the factors affecting phosphate solubilizing bacteria, the mechanism of action of phosphate solubilizing bacteria, and benefits of phosphate solubilizing bacteria, and also role of phosphate solubilizing bacteria. Okay, thanks for watching guys, stay tuned. Okay, thank you everyone.